ज्यादा दुखी रहता है कि वो सोशबिलिटी में है ना, उसको लगता है मैं जैसे पहले घूमता फिरता था फ्री था, लेकिन अब इन लोग के चक्कर में ना मेरा सारा फ्रीडम गया तेल लेने। तो ये जो है ये ऐसा नहीं सोच रही कि वो फ्रेंड से, इसका खुद का ही नहीं जमता है किसी से, क्योंकि ये गुस्से वाली है, इसीलिए फ्रेंड्स के साथ ज्यादा नहीं मिल रही है। हाँ वैभवी बोलो। इन विच केस यू आर आस्किंग रेपिटेशन अनुप्रीता? आप लोग बोलिए जो भी हैंड रेस करके है, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा ऐसा जा रहे हैं फ्लो में। डॉक्टर वैभवी, डॉक्टर रूपाली, you can unmute yourselves. डॉक्टर वैभवी एंड डॉक्टर रूपाली। अनुप्रीता कौन से केस का रिपीटिशन? सेकेंड केस में बर्बरिस 200 दिया था उसको एक ही बार स्टार्टिंग में, फिर बाद में उसको बाद में 2-3 महीने तक नहीं दिया, उसको एसओएस लेने को बोला था एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। फिर एक बार उसको कॉफ बहुत ज्यादा हुआ तो उसको रिसेंटली 1M रिपीट किया था और उससे उसका खांसी पूरा ठीक हो गया, और मेंसेस तो उसका 200 देने के बाद से ही रेगुलर हो गया था और स्किन भी ठीक हो गया था। ओनली दैट उसका एलर्जी कंट्रोल करना था तो 1M रिपीट किया था। और सल्फर देने के टाइम फर्स्ट केस में सिर्फ 1M 1 डोज ही दिया था। शैल वी मूव अहेड, बिकॉज किसी को अगर बोलना होगा तो आप बीच में कभी भी बोल सकते हैं। देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर, व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैपेंस इन फीमेल and how to overcome it. Okay, the female brain, body and hormones. Now this is from the research data of different scientists who have worked on. So next time probably when I come with some male cases, I will show the male side of hormones, but this is a female side of cases where females whose ovaries make the most estrogen and progesterone, they are most resistant to stress. So females, remember and please, propagate amongst other females that estrogen and progesterone are the blessings to females, because you will be less stress prone if you have good levels of estrogen, progesterone, that is your cycles, menstrual cycles. Why stress is less? Because there is a hormone called serotonin, a chemical that makes you feel at ease, cells in their brains. These women with the least estrogen, those women with the least estrogen and progesterone are more sensitive to stress and have fewer serotonin brain cells. So these cases of PCOD, where there is an imbalance in estrogen, generally in estrogen, progesterone generally imbalance nahi hota hai in teenage females, it is more in menopausal females. In young age, estrogen is mostly disturbed, and because of that, the serotonin levels they drop and they become this kind of irritable and suicidal, death desire, menses during. ये जो feeling आता है ना, ये इसके कारण आता है. So when PCOD cases come to me, I generally do hormone profile with them, and then I try to correlate their emotional states with the hormones disturbed. But since these both cases were from, and they are quite expensive, so I did not do the hormone profile with these two cases, and I just let them go without the tests. Why does PMS make women moody? So you see the reason for this. The same thing. The happy hormone serotonin, if estrogen is in good levels, the woman is happy. But what happens during PMS is that estrogen levels are dropping, and that is the time serotonin also drops and the bad moods happen. In PMS, there is hostility, hopeless feelings of depression, plans of suicide, panic attacks, fear, uncontrollable bouts of crying, rage can plague them. तो ये जो गुस्सा हो जाती थी, 2-2 3-3 दिन तक खाना नहीं खाती थी,
वो टाइम पे ये होता है. Hormones and serotonin changes can result in a malfunction in brain seat of judgment, that is the prefrontal cortex. And dramatic uncontrolled emotions can push through more easily in the primitive seats of the brain. तो क्या हो रहा है prefrontal cortex में? यहाँ पे seat of judgment affect हो जाता है. That is the seat of judgment in the brain. And because serotonin brings about these changes at the level of judgment, और उसको लगता है मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई बड़ा, वो फिर भी नहीं कर रहा है, तो वो बाद में कैसे बदल गया ना? Because she also eased out. Thinking about thinking, higher reasoning, executive function is performed at the level of prefrontal cortex. So these are the functions which are getting disturbed when the estrogen and the serotonin drops in the brain. The empathy is not there, insight is disturbed, emotion regulation is disturbed, body regulation, morality, intuition. You see, attuned communication. So she just uses harsh words to talk to anybody, and fear modulation. Now, a girl's emotional centers, they become highly responsive at puberty. Her brain's emotion and impulse control system, the prefrontal cortex, has sprouted many more cells by the age of 12. But the connections are thin and immature. तो क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, सबसे पहले जो उसका sexuality develop होती है in the intrauterine life of the woman, when the woman is pregnant. So in the intrauterine life, जब भी uterus, ovaries develop होना शुरू हो रहे हैं, that is the time when hormone surges are taking place in the brain, bringing about a growth and development of sexual characters or the sexual organs. After intrauterine life, there is a second surge at the time when that is called infantile puberty, around the age of 1 to 2 years. That time, how the environment is, how the emotions of the mother are, everything makes a difference at that time. After 1 to 2 years, then there is the puberty that happens. And at the time of menarche, what is happening is in the prefrontal cortex, उस time पे वहां पे जो cells हैं, जो nerve cells हैं, वो thin और immature है. तो हम बोलते हैं ना टीनेज के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो डॉक्टर पूनम टिंडे मेरे को बोली थी कि ना तेरी बेटी अभी टीनेज में आ गई ना, अभी तो तू बहुत ध्यान रख बाबा, शी विल डू एनीथिंग. एंड लेकिन वो 18-19 की होगी, शी विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. तो आई वाज लाइक अरे ये क्या, सडन ऐसा कैसा चेंज होता है. So then this is the reason where the nerve cells, they are thin and immature. Why? Because they are not coated with the lining of myelin sheath. उसके वजह से क्या हो रहा है कि आप उसको कुछ भी बोलोगे ना, वो एकदम impulsively react करते हैं बच्चे at the teenage time, because they are thin and immature cells. The connections are also like that, resulting in part from increased emotional impulses blasting in from the amygdala and are more rapid and dramatic. So amygdala is the center of emotions with fear, fright, impulses are there. And यहाँ पे prefrontal cortex क्या है, उसको खाली signals को लिए जा रहा है, और जैसा वो amygdala throw कर रहा है, वो वैसा का वैसा ही निकाल रहा है बाहर. There is no cover to it. तो कवर कब आता है? जस्ट 1 सेकेंड. लेस एम्पैथी, सोशल कनेक्शन, अफिलिएशन अफेक्ट होते हैं. तो ये जो अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है ना, तो टीनेजर्स देयरफॉर ऑफन क्लिंग टू एन आइडिया, दे रन विद इट, नॉट स्टॉपिंग टू कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस. बिकॉज वो इतना डायरेक्ट कनेक्शन होता है, दे बिकम रिजेंटफुल ऑफ द अथॉरिटी. अगर मैं बोलूं परी कितना मोबाइल देख रही है, कम कर, तेरा वही जिंदगी बन गया, ये वो, she will just blast off immediately. That wants to head off the impulses. The unfinished, unmyelinated extension cords, most prominent in the connections from the emotion center of the amygdala to the emotion center of prefrontal cortex. तो यहाँ पे से यहाँ पे आने का जो ट्रांजिशन है ना, वो अनमाइलिनेटेड है.
और वो कवर नहीं हुआ है, इसके वजह से एकदम फास्ट कंडक्शन होता है। और ये स्ट्रेस के दौरान जब ईस्ट्रोजन और सेरोटोनिन लेवल्स कम है वो और भी ज्यादा होता है एंड लेट टीन्स तक चलता है। विदाउट द फास्ट कनेक्शन, big downloads of emotional impulses, the result in immediate raw behaviors. इसके लिए वो तुरंत के तुरंत raw behave करते हैं. You see this picture? So unwanted parental restriction, teen amygdala is stimulated, I hate you, sudden signs of rebellion. And then the meltdown, they feel bad at PMS. And then out of control behavior, slamming the doors, गालियां देना, कुछ भी बोलना, मर जाऊंगी, ये वो, ये सब ऐसे स्टेट्स में हो रहा है जो बर्बेरिस का डेथ डिजायर मेंसेस ड्यूरिंग में हो रहा है. So this is the unmyelinated, the down one. You see the conduction, and the above one is the myelinated. तो जहां पे seat of judgment act करता है वो डेवलप होने में 4-5 साल लग जाते हैं. We say that adolescence to adulthood का जर्नी है ये. So going back, at this age, what hormones they actually play a role? Aggression in teens के लिए है ये, for male female दोनों का होता है, but I am just considering for females right now. Rise in puberty at till 18 in females and 21 in males. Female androgens are testosterone, DHEA, androstenedione. तो DHE और एंड्रोस्टेनिडियोन का कॉम्बिनेशन है वो बोस्टफुल फीमेल्स बनाता है. मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, जैसे ये भी बात कर रही है. टेस्टोस्टेरोन और DHEA का कॉम्बिनेशन it relates to early intercourse. And androstenedione and estrogen का combination is a combination of highly ambitious females. Androstenedione का ये है ambition, aggression and acne. So this is the symptomatic correlation of these hormones which are disturbed in this age group. So hormones ka, it is not necessary that they will define the female, but they merely raise the likelihood that under certain circumstances a behavior will come. So circumstance pehle hota hai, and then the fluctuation of hormones, and then the particular behavior and symptomatic changes take place. So I will just take 5-10 minutes more and I will conclude the whole presentation. Very interesting part is remaining. These are my details. And entire tech team of HHF, wholehearted gratitude. Dr. Neelam, Krishna, Hema, Mithun, Joven, Jayant, PC, Priyanka. You really give purpose to our presentations. The entire lovely team of my friends, and my friends in HHF, they are my family and they are my everything. I cannot define it in words. And my book, hope you all buy it. And may the fire of Holi purify your heart, and may the colors color your life. Happy Holika Dahan. One last thing remaining. One second. छिपा रहा पीछे, ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं. Prostitute is who gives money or who takes money, and in being a prostitute only money is involved. कि आप करो ठोको जाओ पैसा दो बस. In war, actually war was considered as a divine woman who used to serve the people around her. So war comes. It is not only coming from money. It is just serving and serving without thinking of oneself. किए जा रही है यार, और क्या क्या करवा रहे हैं लोग, करवाने वाले भी.
तो वो कोई उसके लिए सोच नहीं रहा है, और वो बस सोच रही है कि मैं तो बहू हूँ इसीलिए मैं करती रहूं, और वो माँ भी कब बन गई, कब उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसको होश ही नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूट वाला जो रेमेडी है ना, दैट इज ऑल्सो इन मटीरियलिस्टिक रूब्रिक। कौन सा है वो, पॉलिस्टिरिनम है शायद से, कि वो बस करे जा रहा है और उसको लग रहा है बस मेरे को यूज करेंगे फेंक देंगे, है ना। तो वैसा वाला फीलिंग नहीं है इसको, इसको लग रहा है मेरी माँ वो है जो करे जा रही है लोगों के। So I hope I met the expectations of the mentors over here in HHF, and somewhere if I'm mistaken, please excuse me. Thank you so much. That's it. Thank you everyone for participation. Wow, that was awesome, really awesome, Dr. Pallavi. Thanks. सिर्फ दो लोगों ने हैंड रेज किया है. Should we just ask if they have something to, we can allow them to talk? Sure. Yeah. Dr. Madhuri and Dr. Vishwakarma. Yes, I want to. I forgot. Dr. Sonam ने ये पूरा editing का काम किया है. I'm really thankful to her for pairing with me. Yes, please carry on. Dr. Vishwakarma. एंड हाँ, डॉक्टर नूतन जाधव है क्या, उनने ना एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। डॉक्टर नूतन Okay. जाधव को अनम्यूट करना है Newton, तो ऑनलाइन है तो। just a minute. Dr. Newton, can you please unmute yourself? और किसी को कुछ बोलना है? Dr. Newton? Hello. Hello. हाँ, आ गई। Yeah, Dr. Am I audible? यस यस। मैम मैं अभी रीड करती हूँ. हाँ हाँ हाँ, बोल रहा। तो उसको रेमेडी नहीं मालूम थी नूतन को, पर वो बहुत अच्छा लिखती है, तो मैंने बोला मैं देखो जिस्ट बताती हूँ, तू लिख। तो उसने ऐसे ही फ्री हैंड लिखा है। ओके, थैंक यू. हाँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. You deserve it. चलो मैं पढ़ती हूँ. हाँ। बिल्कुल अपने माँ पर गई है, ये मुझे कतई सुनना नहीं. कुछ हद तक माँ जैसी मैं बनूंगी, पर पूरी माँ मुझे बनना नहीं. सालों से मैंने इस्तेमाल होते देखा, माँ को मैंने न्यौछावर होते देखा. घर संसार की नदी में खुद को बहाते जा रही है. समय, पैसा, सेवा, माँ निस्वार्थ लुटाए जा रही है. मैं स्वयं को लुटाऊंगी स्वयं पे, किसी के हाथ नहीं आऊंगी. छूंगी आसमां, सब दंग दंग रह जाएंगे. माँ से चाकरी करवाने वाले मेरे नजदीक भी ना आएंगे. इतनी ऊंची उड़ान भरूंगी कि कोई पर नहीं काट पाएंगे. सभी की रोक टोक से मैं क्रोधित हो जाती हूँ. अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो, बस यही ख्याल दोहराती हूँ. थैंक यू. वेरी नाइस। तो ये लड़की है, बर्बरिस है, वो सोशल पोजीशन के लिए इच्छा करती है, सोसाइटी में जो पोजीशन है उससे ऊपर उठना चाहती है। एम्बिशन इंक्रीज फॉर मनी, एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम से भी ऊपर का है ये पार्ट, कि जहाँ इकोनॉमिक आप बैकग्राउंड देख के और फिर देखेंगे वो कौन सी ऊंचाई ले रही है। दैट्स इट। Thank you so much, Dr. Pallavi, for this awesome session and for shedding light on the spiritual significance of our menstrual cycle and its depiction in the religious scriptures. So, ladies out here, let us love and embrace our femininity with pride and joy. Let us all cherish the beauty in each one of us. And HHF here empowers every woman to accept her sexuality and also embrace and achieve her dreams.
Heartfelt gratitude to all our amazing speakers for this empowering and enlightening and a spectacular webinar RM7. Each speaker actually brought forward fascinating cases with thorough explanation of all the remedies, which truly showcased the vastness and the depth of homeopathy. Homeopathy is indeed an ocean which is very vast and very profound, and each speaker revealed more and more depth of the ocean as we dive deeper. Thank you to each one of you, all our participants, our delegates, for your active participation, for your love, your dedication, your passion, and your trust in us. I urge each one of you to please view the recordings provided, understand the process of case taking, the core essence of the patient, of the remedy prescribed, and the rubrics. Each one of you, please attend all our lectures, our seminars, our webinars, our sessions, and enrich your knowledge and grow further in your clinical practice. Like I said earlier, Dr. Trish's recordings will be available only after a couple of days. Until then, please view the recordings of this session and enrich your fund of knowledge. And more important, please enroll for I shall just put forward this screen. Enroll for Arohan ASAP. Please connect with your regional HHF heads and do not miss out on this opportunity at all. Immerse yourself in the ocean of homeopathy. Keep growing. Together we all shall grow. Love you all, and so happy to have you all here. Excellent, Pallavi. Excellent, Dr. Pallavi. You have taken an excellent session. Exact, aptly Berberis का सब feel सबको मिला है. We can use this remedy very nicely in our clinic. ऐसे बहुत से लोग आते हैं क्लिनिक में, इनका हम एम्बिशन देखते हैं. These एम्बिशन देख के हमको लगता है ये नॉर्मल एम्बिशन से सबसे अलग है. Okay, we can think of this remedy for that. Excellent, excellent session. Thank you very much. A wonderful day today. And one request to everyone, we would be declaring the registration fees by tomorrow in couple of days. And immediately you have to contact the regional Regional leaders, head. Yes. regional head, and mostly you should You can contact talk and to them. get the details. Yeah. Yes. Yeah. And get the So you details. can pay there. Okay, so in couple of days or by tomorrow, we'll give out the charges and everything, all the details of the seminar. And had a wonderful couple of days. बहुत And मजा आया. yes, looking forward to see you at April 19, 20, 21 in Mumbai. Absolutely. So मिलते हैं सब लोग So, अप्रैल में 19th को मिलते हैं सब लोग. 20 and And 21st. 21, of course. Saying so, happy Holi. Happy Holi, everybody. Enjoy. Enjoy. Holi to all. Happy Holi, enjoy the weekend, And have share fun. your colorful pics tomorrow. Yes. Okay, Great. should I stop the Yes, recording? yes. Sure. Stop. Chalo, Yes. bye-bye. See you all. Bye. See you.